first part we had studied till cotton textile, and today we will start from jute textile industry, which is one of the most important industries in India. So jute textiles or jute fiber is also called as golden fiber. Why? Because it looks like gold only. Its color is beautiful. तो ये कुछ ही एरियाज में इंडिया के बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल के एरिया में है, और सुंदरबन डेल्टा is the most fertile land actually for the cultivation of jute textile industries. So this is the largest producer of raw jute and jute goods. There are about 70 jute mills in our country, which is a huge number. Then first jute mill was set up in Rishra, that is in कोलकाता in 1859. तो ये आपको याद रखना है, ये फर्स्ट जूट मिल कहाँ पे सेटअप हुआ था और कब सेटअप हुआ था. Jute is used in making ropes, bags, carpets, etc. Most of the jute mills are located along Hooghly River in West Bengal. क्यों? Because first of all, it is available in West Bengal. This is the most fertile land. Wetland इसको चाहिए होता है, तो इधर अच्छे तरीके से ये ग्रो कर सकता है. इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, तो इसकी जो लोकेशन है हमें ये बहुत हेल्प करता है. वाटर, क्योंकि आपका बे ऑफ बंगाल भी हो जाता है, हुगली रिवर भी है, तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन इसमें बहुत इजी हो जाता है. देयर इज़ अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द मिल्स एंड एबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट. क्योंकि जो जूट का कल्टिवेशन होता है और उसके बाद जब इससे फाइबर निकाला जाता है, बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, जो इधर अवेलेबल इजीली हो जाता है. देन cheap labor is also available from adjacent states, that is Bihar, Odisha, Uttar Pradesh. Then Kolkata as a large urban center provides banking, insurance, port facilities for export of जूट गुड्स. क्योंकि हमने लोकेशनल बेनिफिट्स में भी देख दिया था कि हम वहीं पे इंडस्ट्रीज़ खोलते हैं जहाँ पे लोकेशनल बेनिफिट हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, फिर हम बैंकिंग और इंश्योरेंस ये भी फैसिलिटीज़ हमें चाहिए. देन रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, ये सब होना चाहिए जहाँ पे भी हम इंडस्ट्रीज़ खोल रहे हैं. देन what are the challenges faced by jute industry? तो प्रॉब्लम्स तो हैं, अभी भी हैं, तो जो हमारी गवर्नमेंट इम्प्रूव करने की सोच रही है. Then stiff competition in the international market for synthetic substitutes and from other competitors like Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt and Thailand. And what is the solution of these problems? In 2005, India formulated one jute policy, that is called a national jute policy, with the objective of increasing productivity, improving its quality, ensuring good prices to the jute farmers and enhancing the yield per hectare. तो ये सारा ये पॉलिसी फोकस करता है कि क्वालिटी अच्छी हो, अच्छे प्राइसेस में फार्मर्स से ये कल्टीवेट कराया जा सके, और जो यील्ड है वो ज़्यादा बढ़ जाए ताकि हम ज़्यादा प्रोड्यूस करें, ज़्यादा एक्सपोर्ट करें. क्योंकि ये एक्चुअली बायोडिग्रेडेबल है, तो दिस कैन बी द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर प्लास्टिक्स. तो इसी वजह से हमें जूट का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए. अब शुगर इंडस्ट्री, दिस इज़ ऑल्सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. देन India stands second as the world producer of sugar. India occupies the first place in the production of gur and khansari. तो ये भी जो प्रोडक्ट है ये भी निकाला जाता है शुगर केन से. Then the raw material used in this industry is very bulky. हैवी ही होता है. शुगर केन बड़े बड़े एकदम डंडे जैसे होते हैं, तो उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है. So it is the second largest agro-based industry after cotton. So in 2010 and 11 there were over 662 sugar mills, जो कि बहुत बड़ा huge number है, and which is located in Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, Punjab, Haryana, Madhya Pradesh. Okay, तो ये सारे states में शुगर केन की अच्छी पैदावार हो जाती है हमारी कंट्री में, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं. तो
तो ये इम्पॉर्टेंट भी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें शुगर बनता है। तो शुगर तो हमारे बेसिक नेसेसिटीज़ में आ जाता है, और इतने सारे मिल्स खुले हुए हैं जिसको कि हम डेवलप कर रहे हैं और भी। देन मोस्ट ऑफ द मिल्स आर नियर द शुगर कल्टिवेटेड एरियाज ओनली। अगेन in this industries also we have to face some challenges, and what are they include seasonal nature of the industry। अब शुगर केन पूरे साल भर तो उगाया नहीं जा सकता, ये सीजन बेस्ड होता है, तो उसके लिए कभी कभी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है प्रोडक्शन पे। ओल्ड एंड एफिशिएंट मेथड है, अभी भी हम पुराने मेथड्स, टूल्स, मशीनरीज यूज़ करते हैं इसके क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए और एक्सट्रैक्शन के लिए भी। देन ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू फैक्ट्रीज, क्योंकि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, ये बहुत बल्कि होता है, हैवी होता है, तो इसका ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा खर्चे भी होते हैं, टाइम भी लगता है, तो कई बार ये डिले भी हो जाता है। देन नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैगीज। व्हाट इज बैगीज? बैगीज इज एक्चुअली द वेस्ट comes after we extract the juice from the sugar cane। तो वो भी बहुत हैवी होते हैं और उसको डिकम्पोज करना बहुत दिक्कत होता है, तो इसको यूटिलाइज करना हमारे पास कोई मेथड नहीं है इसको यूटिलाइजेशन करने के लिए, जो कि अभी और डेवलप करना होगा हमें। सो this is about our sugarcane. Then sugarcane industries is shifting from northern area to southern India। क्यों? ये एक रीज़न है जिसको हमें स्टडी करना है कि क्यों हम शिफ्ट कर रहे हैं साउथ एरिया में। सो अर्लियर यूपी एंड बिहार वेर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ सुगर केन, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द सुगर मिल्स वेर लोकेटेड इन दीज टू स्टेट्स ओनली, but now sugarcane are shifting towards Maharashtra and Karnataka. What are the reasons for this? First, the per hectare production of sugarcane is higher in southern India. Black soil is quite suitable for cultivation of sugarcane. Okay, so sucrose content in the sugarcane is higher in Maharashtra and Karnataka, जिसकी वजह से उसकी सेल भी ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन भी ऐसे ही शुगर केन करने की ज़्यादा हो तो फ़ायदेमंद रहता है। देन इट मीन्स मोर शुगर कैन बी प्रोड्यूस्ड फॉर लेस शुगर केन, तो ये फ़ायदेमंद है, तो इसीलिए इसका ही कल्टीवेशन ज़्यादा बढ़ना चाहिए। मील्स एंड मशीन्स आर न्यू इन सर्दर्न एरिया स्टेट्स, तो जो अभी लेटेस्ट खुले हैं मिल्स वो नए मशीन्स यूज़ कर रहे हैं। नए मशीन्स होगा तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली हम अगर साउथ में शिफ्ट हो रहे हैं तो हमारे लिए बेनिफिट है ये। देन क्रशिंग सीजन फॉर शुगर केन इज़ लॉन्गर इन सर्दर्न स्टेट्स, तो in fact like it is grown in most of the months, so that's why it is more conducive and productive to grow it in southern states. Then cooperative sugar mills are running successfully in southern states, तो cooperative way में जितना लोग मिल के काम करेंगे और इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो कोऑपरेटिव मिल्स बहुत सारे हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल हैं। तो फॉर ऑल दीज रीजन्स एक्चुअली सुगरकेन इंडस्ट्री इज शिफ्टिंग टू southern India. Then comes mineral based industries. Okay, so till now under agro based industries we read about cotton textile, we read about jute textile mills, and we read about sugarcane industries. So now we will focus on mineral based industries जिसके raw materials ज़्यादातर mineral है। तो first जो हम पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील है, फिर एल्युमिनियम है, केमिकल है, फर्टिलाइज़र है, सीमेंट है, ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। देन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सो दिस इंडस्ट्री इज़ कॉल्ड एज बेसिक इंडस्ट्री। तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि हम आयरन एंड स्टील को बेसिक इंडस्ट्रीज क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू मेनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज मशीन्स एंड टूल्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक्सेट्रा। सो कोई भी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का कोई एक एरिया बता दीजिए जहाँ पे हम ये आयरन का यूज़ ना करते हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो दिस इज़ लाइक सच अ रॉ मटेरियल दैट इट इज़ यूज्ड इन ईच एंड एवरी इंडस्ट्री। तो चाहे हम पिन बना रहे हैं, टायर बना रहे हैं, बड़े बड़े मशीन्स, कार्स, कुछ भी बना रहे हैं, हमें
आयरन और स्टील की ज़रूरत होती है. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज बेसिक इंडस्ट्रीज. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज heavy industry because the raw material is bulky in nature. Okay, so most of the steel plants are located in छोटा नागपुर रीजन. और जहाँ पे भी हम ये इंडस्ट्री लोकेट करते हैं हमें रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए. तो टुडे steel industry in India are facing many problems. Or what are the challenges? So these will be the challenges. High cost of production, no doubt it is the costliest raw material. Then limited अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल. तो हमारे इंडिया में ज़्यादा कोकिंग कोल अवेलेबल है नहीं, जिसके लिए दिक्कत आती है. देन लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. सो लेबरर्स आर नॉट दैट स्किल्ड और ट्रेन्ड टू actually to be involved in manufacturing industries. So regular supply of energy भी नहीं रहती. Raw materials are found only in a certain pocket of India. तो वो वही है कि बस कुछ वेस्टर्न पार्ट के ही रीजन हैं जिसमें ये छोटा नागपुर आता है. तो कुछ ही बेल्ट्स हैं जहाँ पे आयरन एंड स्टील, हालांकि 4 ही बेल्ट्स हैं, तो बहुत लिमिटेड जगह में इंडिया के ये पाया जाता है. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. सो ऑल दीज आर द challenges and you can just extend these points and make your points. Elaborate. Then why is the iron and steel industry located in Peninsula India only? Again, this is we have already discussed कि limited zone में ही ये iron and steel industry खोले गए हैं. तो गुड्स एंड मोर रॉ मटेरियल्स, तो ये जहाँ पे पाए जाएंगे रॉ मटेरियल्स वहीं पे खुल सकते हैं. तो पेनिनसुला इंडिया में पाया जाता है, तो वहीं पे कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं. सो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ good quality iron and steel is available in Peninsula India only. Power resources, that is coal, oil, water power are available in Peninsula India. Skilled labor, चीप जो स्किल्ड लेबर चाहिए इसमें तो कुछ ही स्टेट्स के हैं. तो और इसी रीजन में जैसे आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया या साउथ का कुछ पोर्शन हो गया, तो ये यहीं पे अगर खुलेगा इंडस्ट्री तो ऑब्वियसली लोग भी यहीं आसपास के लोकल एरियाज से लिए जाएंगे जो काम कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में. दैन नियरनेस टू मार्केट, दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पोर्ट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चर्ड goods. So these are the reasons why it is located in peninsula part of India. So हम देख सकते हैं वेस्ट और कुछ साउथ के ही रीजन में ये पाया जाता है. जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर, बर्नपुर, बोकारो, भिलाई, विजयनगर, भद्रावती and Salem and Visakhapatnam. So these are the areas which is marked, and here only we can see these plants are located, that is iron and steel plants. Okay, then come to the another section, that is aluminium smelting plants. Okay, this is the second most important metallurgical industry in India. So it is light, okay, resistant to corrosion. Aluminium, we know the features of aluminium and why it is actually used in a very big way. So a good conductor of heat, malleable, that means we can give shape to this metal and it becomes stronger when it is mixed with other metals. It is used to manufacture aircrafts, utensils, wires. It has gained popularity as a substitute of steel, copper, zinc and lead in a number of industries. So it works as a good substitute of these minerals. Then aluminium smelting plants in the country are located in Odisha, West Bengal, Kerala, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra and Tamil Nadu. So in 2008 and 9, India produced over 15.29 lakh million tons of aluminium, okay, which is a good quantity. Bauxite, the raw material used in the smelters, is very bulky. So for the production of aluminium, we need bauxite, okay. This you have to remember. So this is the raw material used in the smelters, okay. This is dark reddish colored rock, and regular supply of electricity is required and an assured source of raw material at minimum cost are the true prime factors for location of the industry. तो जहाँ पे bauxite easily मिल जाए, electricity easily मिल जाए और
फिर लेबरर्स मिल जाए, और इसका जो malleability, all these properties make it very popular. Okay, then come to केमिकल इंडस्ट्रीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारा मेडिकल, फार्मा, देन योर वेरियस फर्टिलाइजर्स, ऑल दीज आर डिपेंडेंट अपॉन द केमिकल इंडस्ट्री. Okay, and it is fast growing and diversifying. It contributes approximately 3% of the GDP. It is the third largest in Asia and occupies the 12th place in the world in terms of its size. So you have to remember this. Okay, remember this, that is the third largest in Asia, okay, and 12th place in the world in terms of its size, so which is a big one, but still we need to improve upon it. It comprises both large and small scale manufacturing units. So the chemical industry is its own largest consumer. ओके, तो केमिकल इंडस्ट्री को ही केमिकल की ज़रूरत है, क्योंकि वो दूसरे उसका रॉ मटेरियल यूज़ करके फिर और बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी. सो बिकॉज बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग to further produce other chemicals that are used for industrial application, agriculture, or directly for consumer markets. There are two types of chemicals, that is inorganic and organic chemicals. तो organic chemicals क्या होते हैं? It includes petrochemicals which are used for manufacturing of synthetic fibers, synthetic rubber, plastics, dyestuffs, then drugs, pharmaceuticals. Organic chemical plants are located near oil refineries or petrochemical plants. Okay, so you have to remember this कि ये कहाँ पे located होते हैं? Oil refineries के आसपास ये होते हैं. Then inorganic chemicals क्या होते हैं? It includes sulfuric acid used to manufacture fertilizers, synthetic fibers, plastics, adhesives, paints, dyes, stuffs, nitric acid, alkalis, soda ash used to make glass, soaps and detergents, paper and caustic soda. These industries are widely spread over the country. So inorganic and organic chemicals are there. Next comes fertilizer industry. Fertilizer, this is a very important one because agricultural sector depends on high quality of fertilizers and pesticides. So the first fertilizer plant in India was set up at Ranipat in Tamil Nadu in 1906. Okay, so the fertilizer industry is centered around the production of nitrogenous fertilizers. At present, there are 10 public sector undertakings and one in cooperative sector at Hazira in Gujarat under the Fertilizer Corporation of India. And its distribution, Gujarat, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Punjab, Kerala produce more than half of the total fertilizer production in India. Andhra Pradesh and Karnataka are other important producers because of the easy availability of natural gas. The fertilizer industry is widely spread in the country. So we have the availability of natural gas and production. India produces about 1 million tons of nitrogenous, 4 million tons of phosphatic and 1.7 million tons of potassic fertilizers. Okay, so 4 million tons of phosphatic, 1.7 million tons of potassic fertilizer, okay, and 1 million tons of nitrogenous, okay, fertilizer. So the country is required to import potassium from abroad also. Cement industry. Cement ये तो हर घर को बनाने के लिए चाहिए, तो जितना ज़्यादा ये सीमेंट इंडस्ट्रीज़ डेवलप होगा, हमारी रोड्स, हमारे कंस्ट्रक्शंस बिजनेस और ज़्यादा बढ़ेंगे. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. देन सीमेंट इज़ एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग हाउसेज, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स एंड फॉर अदर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स. This industry requires bulky and heavy raw materials like limestone, silica, aluminium, and gypsum. Coal and electric power are needed apart from rail transportation. So the first cement plant was set up in Chennai in 1904. So popular cement companies in India, ACC Cement, okay, Ultratech Cement, ये सारे ads भी हम TV में आराम से देख सकते हैं. Then comes automobile industry. Automobile, you all are familiar with.
all the automobile industry, I hope. So these are some of the logos. Then automobiles provide vehicle for quick transport of goods and services and passengers. Trucks, buses, cars, motorcycles, scooters, three-wheelers and multi-utility vehicles are manufactured in India at various centers. The industry is located around Delhi, Gurgaon, Mumbai, all metro cities. Okay, तो क्योंकि ज़्यादातर लोग इन सारे शहरों में रहते भी हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है और उनकी डिमांड भी होगी automobiles की, तो that's why industries are located in all these metro cities, so of course they will demand more of automobiles. Then comes information technology and electronic industry. So the continuing growth in the hardware and software is the key to the success of IT industry in India. Okay, so we are developing and in fact our GDP is increasing because of this service sector. So electronics industries cover, okay, a wide range of products from transistor set to television, telephone, cellular, telecom, pagers, telephone exchange, radars, then computers and many other equipments required by the telecommunication industry. Bangalore has emerged as the electronic capital of India. Okay, then other important centers include again all these metro cities, क्योंकि इधर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं. So by 2010 and 11, STPI, remember the full form. What is this? Software Technology Parks, okay, of India have come up across 46 locations at different centers of India. A major impact of this industry has been on employment generation, and it is encouraging to know that 30% of the people employed in this sector are women. So this is a very good thing, and this sector is developing day by day, and actually many of the issues or the problems of India are getting solved by this development of software technological parks. Then these are the locations where we can see software technology growing up: Bhubaneswar, all the metro cities, okay, and big towns. Then industrial pollution and environmental degradation. This is also this is very important because ये industries खोलने से तो बहुत फ़ायदे हैं, GDP increase होता है, no doubt, but at the same time it is creating pollution or our environment is degrading day by day. So it is the responsibility of our government to check these pollution and devise some solutions for this. So air pollution, air pollution we all are aware, okay, this is caused by the emission of carbon dioxide, monoxide, okay, sulfur dioxide, etc. So chimneys of the industries produce heat, okay, leading to global warming and greenhouse effect. तो ये तो बहुत बहुत ब्रॉड टॉपिक है, ये मुझे लग रहा है आप लोगों को पता भी होगा. तो हमारा पूरा एनवायरनमेंट एक्चुअली डिग्रेड हो रहा है क्योंकि ये सारे इंडस्ट्रीज एमिट करते हैं पॉइजनस गैसेस. सो यूज ऑफ CFC is in various industrial products deplete ozone layer which filters ultraviolet rays of the sun. Air pollution affects the human health of humans, okay. Air pollution, it is one of the dangerous thing that is actually hampering the health of not only human beings, animals, okay, it is destroying all the plants also, and it is causing damages to even buildings. Then comes water pollution. So dumping of organic and inorganic industrial waste into the water bodies pollute the water. Water pollution is also caused by the discharge of the untreated chemical wastes like dyes, detergents, acids, heavy metals like lead, mercury, plastic, fertilizers, etc. तो ये इंडस्ट्रीज कुछ फॉलो ही नहीं करते, अनट्रीट ही नहीं करते जो भी पानी वेस्ट. और जब इंडस्ट्रीज खुलेंगी इतने बल्क में अमाउंट प्रोड्यूस होंगे तो वेस्ट वाटर तो निकलेगा ही, लेकिन वो क्या है, उसको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, उसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट या कुछ चीज़ें दें जिसमें केमिकल जो
इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम हो जाए। वो बिना किए अगर हाँ ये लैंड में चले जाएंगे या रिवर में मिल जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन और हार्म करते हैं। इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस पेपर, पल्प, केमिकल, लेदर, acids, dyes, fertilizers, etc. generate lot of toxic waste which kills the aquatic life also. Thermopollution. Thermopollution of water occurs when hot water from the factories and thermal plants is drained into the rivers and ponds before cooling. ठंडा करने से पहले, क्योंकि थर्मल लॉट ऑफ हीट। तो इंडस्ट्रीज जब हम सोचो आयरन को पिघला रहे हैं, स्टील के इतने बड़े बड़े चीज़ें हम बना रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस होता है। और ये जो गर्म पानी होता है ये अगर लैंड में चला जाता है या पानी में चला जाता है, इट डिस्ट्रॉयज मेनी थिंग्स। सो बिफोर कूलिंग इट शुड बी कूल्ड एंड देन इट शुड बी okay, that should be mixed with the water of the river or land, but it is not done properly by the industries. Then comes noise pollution. So high intensity sound generated by running machines, siren, drilling, fans, etc. leads to noise pollution. It causes irritation, hearing impairment, heart attack, etc. among the nearby people, which is also causing many disturbances in the society. Then what are the methods to control this pollution and how we can protect our environment? So we should minimize the use of water for processing by reusing and recycling it in two or more successive stages. Harvesting of rainwater to meet water requirement, that this can be done. Treating hot water and effluents before releasing them in water or ponds, that should be done. Treatment of industrial effluents can be done in 3 phases. So first is your primary treatment by mechanical means. This involves screening, grinding, flocculation and sedimentation. Second is the secondary treatment by biological processes. Third is the tertiary treatment by biological, chemical and physical processes. This involves recycling of wastewater, and noise absorbing material also can be used. So by these steps we can control the environmental degradation, which is the need of the hour. Okay, so in this chapter one example is given, that is of NTPC, that is National Thermal Power Corporation Limited. So this is one of the organizations which has implemented all these solutions. So NTPC is a major power providing corporation in India. It has ISO certification for EMS, that is Environment Management System 14001. The corporation has a proactive approach for preserving the natural environment and resources like water, oil, gas and fuels in places where it is setting up power plants. This has been possible through optimum utilization of equipment, adopting latest technologies and upgrading existing equipment, minimizing waste generation by maximizing ash utilization. It has also provided green belts for nurturing ecological balance and addressing the question of special purpose vehicles for afforestation. Then reducing environmental pollution through ash pond management, ash water recycling system and liquid waste management. तो ये सारे इनिशिएटिव लिया हुआ है एनटीपीसी ने. Ecological monitoring, reviews and online database management for all its power stations. So all these steps are being implemented by NTPC, and likewise many other organizations should follow these rules and regulations so that we can actually get the benefit of from our industries, and it should not be a limitation for us, because ultimately if it is going to destroy our environment then it is of no use. तो एक proper balance होना चाहिए industries के benefits और losses में. In fact loss बिल्कुल कम होना चाहिए और इसका benefit पूरे लोगों को मिलना चाहिए, और अल्टीमेटली हमारी कंट्री तभी ग्रो कर सकती है. सो दैट्स इट. Please revise again and again all these slides, and I will be providing you the question and answer notes also. So hope you understood, and for any other further query you can always contact me. Thank you and have a
Nice day.